Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our session 3 for legal maxim. Here we are going to discuss 10 important maxims related to your law preparation for CLAT. I'm sure all of you are enjoying our PDF module on protalentdigital.com, and now let me move towards discussion on these issues. Number 1, factum probans. Now this is very important thing. Okay, there are two words. इसमें दो words है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग दैट आई नीड टू स्पीक इन हिंदी और ज्यादा हिंदी में बोलूं और इंग्लिश कम. सो आई ट्राई टू मिक्स बोथ ऑफ थिंग. मैं दोनों चीजों को मिक्स लेके चलूंगा. ठीक है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ेगी. दोनों स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, इंग्लिश में भी समझ में आएगा और हिंदी में भी समझ में आएगा. ठीक है, सो दिस इज फैक्टम प्रोबेंस एंड देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड फैक्टम प्रोबेंडम. एक वर्ड है फैक्टम प्रोबेंस और दूसरा वर्ड है फैक्टम प्रोबेंडम. So what is factum probans? It is called relevant fact. ठीक है, while factum probandum बोलता है that it is ultimate fact or fact sought to be established. ठीक है, so ये क्या है? relevant fact है. ठीक है, और ये है जो fact establish किया जाता है. ओके, चलिए let's understand इसका क्या मतलब हुआ. ठीक है, so facts bearing on question whether the act was accidental और इंटेंशनल, और वहां पे ये दोनों चीज की जरूरत पड़ती है. ओके, ठीक है, बहुत बार फैक्टम प्रोबेंडम के लिए फैक्टम प्रोबेंस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, दैट रिलेवेंट फैक्ट के द्वारा यू विल बी इन अ पोजीशन टू एस्टैब्लिश द अल्टीमेट फैक्ट. ओके, सो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act was formed part of a series of similar occurrences or in each of which a person doing the act was concerned is relevant. ठीक है, so वहां से हम factum probandum पर जा सकते हैं. So sometimes it is difficult for us to prove this factum probandum and therefore जाना कहां पड़ेगा? factum probans, and we take series of relevant fact, और वो series of relevant fact की वजह से we can go to prove the ultimate fact. I hope that is very clear. एक illustration आपके सामने है. A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. ठीक है, the fact that A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received a payment from different insurance office, and that those information are relevant. ठीक है, because they will prove that fires were not accidental. Okay, so they are called factum probanus. ठीक है, and उसके ऊपर से आया factum probandus. Okay, चलिए, great. So that's the first legal maxim for our discussion. Let's come to number 2. Number 2 बोलता है fros est celare fraudem. ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूं that I am not perfect in terms of pronunciation, तो बस उसकी वजह से आप मुझे माफ करिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So ये बोलता है that it is a fraud to conceal a fraud. कोई fraud हो रहा है और आप उसको कंसील करते हैं, तो उस कंसीलमेंट को भी फ्रॉड गिना जाएगा. चलिए, ग्रेट. तो ये बहुत मजेदार केस हुआ था अमेरिका के अंदर. द कंपनी कॉल एनरॉन, वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनीज में इसका नाम आता था. एनर्जी की बहुत बड़ी कंपनी थी एंड दे वर डूइंग फ्रॉड. और उनके साथ है ना, उनका एक लीड ऑडिटर हुआ करता था, है ना, दैट्स कॉल्ड आर्थर एंडरसन. उन्होंने भी एक तरीके से उनके फ्रॉड को दबाने के लिए दे डिस्ट्रॉयड ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनरॉन. ठीक है, जिसकी वजह से इसने भी फ्रॉड किया ऐसा माना गया. एंड आफ्टर दिस फेमस केस इन अमेरिका, a new law which were introduced called Sarbanes-Oxley law. ठीक है, अब इसके द्वारा क्या हुआ? उसके द्वारा ये हुआ that a company will have an accountant which is a separate firm, and auditor would be a separate firm. Same firm will not do accounting as well as auditing. ठीक है, because that's called conflict of interest.
ठीक है, तो ये एक मजेदार सा सार्बेन्स-ऑक्सली लॉ आया एंड दैट क्रिएटेड अ बिग चेंज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ अमेरिका एंड ऑफ ऑब्वियसली ऑफ द वर्ल्ड. कॉर्पोरेट विल के अंदर, कॉर्पोरेट विल, VEIL, VEIL, विल का मतलब होता है पर्दा. कॉर्पोरेट पर्दे के अंदर जाकर कंपनियां कुछ भी करना चाहे वो नहीं कर पाएगी, स्पेशली विद दिस सार्बेन्स-ऑक्सले लॉ. ओके, चलिए, ग्रेट. सो दैट्स नंबर 2. कमिंग टू नंबर 3, फंक्टस ऑफिशियो, दैट इज नो लॉन्गर हैविंग पावर और ज्यूरिसडिक्शन. अब आप लोगों का पहला फोकस ये दो फोटोग्राफ पे जा रहा है, ठीक है. बहुत ही मतलब उसको थोड़ा सा मजाक करने के लिए मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ लगाया है, ठीक है. जब किसी बंदे को रेड कार्ड मिलता है, सो इज नो लॉन्गर हैविंग अ पावर टू बी ऑन द ग्राउंड, उसको बाहर निकल जाना पड़ेगा, ठीक है. सिमिलरली इन अ मूवी कॉल्ड बाहुबली, ठीक है, आफ्टर दिस पर्टिकुलर सीन जब ये बाहुबली को उनके देश के, महिष्मती देश का जो सेनापति बना के रखा था, उस पोजीशन से उसको निकाल दिया, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड फंक्टस ऑफिशियो, नो लॉन्गर हैविंग पावर और ज्यूरिसडिक्शन. एन ऑफिसर or agency whose mandate has expired either because of the arrival of an expiry date or because of an agency has accomplished the purpose for which it was created, और उसकी वजह से वो पोजीशन खत्म हो गई, and therefore that person becomes functus officio. Remember, ये दोनों एग्जाम्पल सिर्फ मजाक के लिए है, प्रैक्टिकली उसका कोई गणित नहीं है. It is when used in the relation to a court, it may also mean whose duty or authority has come to an end once a court has passed a valid sentence after a lawful hearing. It is functus officio and cannot reopen the case. Okay, that is the meaning of functus officio, no longer having power or jurisdiction. This is the meaning of this functus officio. I hope this is very clear to you. Okay, let me move further and talk about number 4. Coming to number 4, says ignorantia juris non excusat. Ignorance of law is not an excuse. In the world, across the world, this is termed as very important principle. Ki, when you, let's say, kill someone and you say, oh, I was not knowing that in your country, if I kill someone, it will be a crime. Okay? So such kind of ignorance is not acceptable. That is ignorantia juris non excusat. Similarly, there is another wording called ignorantia legis neminem excusat. Okay? Even though it would be impossible even for someone of a substantial legal training to be aware of every law. Remember this is very important. किसी बंदे को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए, 5 ईयर का लॉ कोर्स करने के बाद आपको प्रॉपर लॉ का नॉलेज होगा, बट इट विल बी वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू टू नो ऑल द लॉज, ठीक है, विच आर इन द ऑपरेशन, ठीक है. सो इवन इन दैट सिनेरियो इट इज एज्यूम्ड कि आपको लॉ पता है. नाउ ये किस लिए दिया जाता है? इट इज प्राइमरली बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल may become willful blind, saying that, oh, I did not know that. Okay? So they cannot become the basis for exculpation. Exculpate करना, किसी को आरोप में से मुक्त करना. Exculpate is to remove someone from the charge. Okay? So in a classic case where Sanjay Dutt was involved in this AK-47 rifle, he might have said, oh, I did not know what was the law. Then that may be willful blindness. That may be willful blindness. Okay? The doctrine assumes that the law in question has been properly promulgated. That means it is published and distributed. This is what the doctrine assumes. ये जो law है, ये principle है, उस principle के लिए सबसे बड़ी assumption ये है कि जो भी law बनाया गया है, that is properly been promulgated. That means it has been published and it has been distributed properly to the people. Okay, so ये photograph लगाने का basic मकसद यही था, that the movie is there and I'm sure you can connect it well. That is primary purpose. You should be in a position to connect with your knowledge around the world. Okay, coming to number 5, ignorantia facti excusat. Now this is interesting. ठीक है, ये बिल्कुल उसका एक जो previous maxim था उससे ये थोड़ा सा अलग है. ये बोलता है ignorance of fact is excused. ठीक है, any act which is done under
a mistaken impression of a material fact is excused. ठीक है, so for example you went to purchase a particular, let's say scooter, and you wanted to purchase Bajaj Chetak scooter. Okay, you said to the other guy, oh, I want to purchase Chetak. The other guy said, oh, I am ready to sell Chetak. Now the other guy believed Chetak as in horse and you believed Chetak as in scooter. Okay, then it will be called ignorance of, you can say, a mistake. This is what basically the idea. Okay, so act done under mistaken impression, it can be excused, that's acceptable. Acts and contracts which are made under mistake or an ignorance of a material fact which are voidable. However, remember, ignorance of law is not an excuse. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था. Okay, ignorance of law cannot be excused. Moving further, number 6, injuria sine damnum, and then there is another one called damnum sine injuria. Sine, damnum sine injuria हम आगे देख चुके थे, इसलिए I'm not covering it here. ठीक है, injuria sine is without damage. There is injury but there is no damage. There is injury but there is no damage. We learned that aspect, that injury means आपका कोई legal right violate होना, आपका कोई legal right violate होना, उसको injury बोलते हैं. Damage has to be a physical damage. For example, in a famous HB versus White case, Mr. HB was wrongfully prevented from exercising his vote at an election by the misfeasance of a constable, Mr. White. Okay. Interestingly, the candidate for whom HB wanted to give his vote had come out successfully in the election. Still, he brought an action claiming damages because his legal right of voting was infringed. उनका legal right था जो vote करने का, that got infringed, and therefore court allowed damages. Remember, there's a difference between damages, damage and injury. Okay, injury का मतलब होता है legal injury, damage का मतलब होता है physical damage, और damages का मतलब होता है compensation. Okay, compensation. This is connected to your tort. Okay, compensation. Moving further, ipso facto, by the mere fact of, ipso facto, by the mere fact of. ठीक है, और उसके related I have put some sentences for you. It says, if a crime occurs, there is ipso facto a guilty party. अगर कहीं पे crime होता है, so there, by the mere fact the crime has occurred, it is पक्का कि guilty party होगी. Similarly, he was an outstanding pupil. He was a very good student, and therefore, by that very fact, he was disliked by the rest of the class. Okay. This is a civil war, and civil wars are ipso facto destructive for all involved. If there is a civil war, anyone who is involved in it, for everyone, it is destructive in nature, which ipso facto is apprehended by its performer as that pattern. Okay. So these are the few sentences for you to understand ipso facto, by the mere fact of. Similarly, let's talk about number 9. It says impromptu, that is in readiness. Okay. That means without any preparation. Okay. Without any preparation, impromptu. Okay. So that means कोई भी चीज बगैर तैयारी तुरंत करना पड़ेगा. That's called impromptu. I'm not sure how many people will be able to attend impromptu party. ये सब sentences है कि impromptu कैसे use किया जाता है, so that you can remember it for a longer period. Okay, ठीक है. Because Jane had an impromptu wedding, she did not send out invitations to people. The singer was more than willing to perform an impromptu song at friends' concert. ठीक है. So the singer was saying that I will not rehearse, I will simply perform impromptu. ठीक है. After my girlfriends and I took one picture at the beach, we couldn't stop posing and ended up having an impromptu photo shoot. This is how it can be used. Okay. Coming to number 9, in lieu of, instead of, in lieu of, instead of. ठीक है. So उसके भी यहाँ पे sentences देके रखा है. क्या देके रखा है? It will be gone and you will have nothing valuable in lieu of it. ठीक है. अगर ये चीज चली गई तो इसके behalf में is instead of this you will not get anything. In lieu of oil lamps, instead of oil lamps, small conveniently placed
incandescent electric 6 volt bulbs are employed. ठीक है, तो ये जब पहले ऑयल लैंप हुआ करते थे उसकी जगह पे जब इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए गए, सो उसके बारे में ये बात हो रही है। उस जमाने में होटलों में लिखा जाता था कि रिमेंबर दिस इज इनकैंडेसेंट बल्ब, प्लीज डू नॉट यूज फायर। ठीक है, क्योंकि लोगों को आदत थी कि ऑयल लैंप लगाने के लिए फायर लगाते थे और वहां बल्ब दिखता था तो उनको लगता था कि ये कुछ नई चीज होगी, चलो फायर लगा के देखते हैं। तो होटल्स में ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे, है ना। तो उस तरीके से इनकैंडेसेंट बल्ब, लंदन वाज द फर्स्ट सिटी जिसमें पूरे शहर में जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो इनकैंडेसेंट बल्ब से लगाई गई थी। ओके, आजकल बातें चलती है कि कौन सी सिटी है जो फुल्ली एलईडी बल्ब से नवाजित हो चुकी है। ओके, सो इंग्लिश मेयर्स एंड सिविल ऑफिशियल्स robes are frequently trimmed with this fur in lieu of sable. तो उनको ये फर लगाया जाता है in lieu of sable. Okay, so that's the meaning of in lieu of. And last one for our discussion for this particular module, it's called in personam. That means a proceeding in which a relief is sought against a specific person. An in personam action can affect the defendant's personal rights and interest and substantially all of his property. Remember this is in personam. It is based on the authority of a court or jurisdiction over a person as an individual rather than a jurisdiction over a specific property owned by a person. This contrast with in rem jurisdiction. The in rem bolta hai an action that are limited to the property of defendant. ठीक है, तो भैया दो तरीके की कंपनियां होती है। ठीक है, एक होती है प्रोप्राइटरशिप हो गई और एक हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई तरीके से, है ना, अगर कहीं पे उसको नुकसान हुआ, उसने लोन लेके रखी है और उसके पास पैसे नहीं है, तो जो क्रेडिटर थे वो उनसे लिमिटेड चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, वाइल इन पर्सोनम दैट इज प्रोप्राइटरशिप जैसी कंपनी में उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी कोर्ट लेके निकाल सकता है। सो अगर कभी कभार कोर्ट इन पर्सोनम अगर केस करता है तो दैट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको भी ये लोग ले सकते हैं। वाइल इट इज इन रेम जुरिस्डिक्शन का मतलब है देयर इज अ लिमिटेशन कि उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी और जो इन रेम है दैट इज लिमिटेड टू दैट प्रॉपर्टी। ओके, चलिए ग्रेट। सो विद दिस आई क्लोज दिस मॉड्यूल एंड आई once again tell you, do not forget to register at protalentdigital.com जहां पे आपको इस मैक्सिम्स की पीडीएफ मिलेगी। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। थैंक यू।